Thank you, Mr. Vandana. Now we are going into the Q&A session. We do have the FA mics ready. Please raise your hands. The two captains are there. Who also will speak about the two, and also I'm sure we will have a question of the two new captains. And the sponsors who also has some direct signals. නවාලයක් ජාතික කණ්ඩායමේ නායකයෙක් පත්තරාම මොනවද දේවල් පොඩි සුළු කාලෙකදී ප්‍රේමස් කරවදීනේ නායකත්වයක් පත්තරාම ඔව් මුලින්ම කියන්න ඕන නායකත්වයට පස්මාට පස්සේ ගොඩාක් වෙනස් කිරීම කරන්න මම කැමති නෑ. මට එකම දේ ඕන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ නිදහස් මානසිකත්වයකින් ඇවිල්ලා තරම් ක්‍රීඩා කරනවා දකින්න තමයි මම නායකයෙක් විදිහට ආසයි. ඉතින් මම කරේ ගොඩක් වෙලාවට මම try කරන්නේත් free environment එකක් team එක ඇතුලේ හදන්න, team එකත් ඒ players ලට perform කරන්න අවශ්‍ය අනිත් ටික හදලා දෙන එක. ඉතින් නායකයෙක් විදිහට මම ඉදිරියේදීත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ freedom එක කණ්ඩායමට ලබා දීලා එයාලගේ 100% එළියට ගන්න. Next question is Hello Surya, first of all congratulations. कैप्टनसी के लिए और आपके वंडरफुल कैच है जिसने हमें वर्ल्ड कप लाया. इस T20 सीरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 जो सीनियर खिलाड़ी हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड रवींद्र जडेजा रिटायर हो चुके हैं और आप 2 सीनियर खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या टीम के सामने हैं. तो हार्दिक भाई की अब क्या भूमिका रहेगी आपकी कैप्टनसी के अंदर और क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है टीम में जो एज ए कैप्टन आपने किया? देखिए हार्दिक का तो हमेशा से रोल सेम ही रहा है और अभी भी रोल सेम ही रहेगा उसका. जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो टीम के लिए और जैसा उसने वर्ल्ड कप में किया आई थिंक उम्मीद रहेगी कि वो सेम कंटिन्यू करते रहे उसको. और टीम का एटमॉस्फेयर जैसे कि मैंने बोला हमेशा से अच्छा ही था. जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप में खेले और खेलना चाहते हैं तो हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे. कुछ चेंज नहीं होगा. और आपने जो बोला कि 3 प्लेयर रिटायर हो गए, डिफ़िकल्ट होगा शूज़ फिल करना, बट लोग ऑब्वियसली इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतना खेल चुके हैं, नए नए प्लेयर आ गए हैं जो उन लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं जब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं. और इंडिया के लिए भी जो कुछ मैचेस खेले उन्होंने उसमें भी बहुत अच्छा किया है. तो मुझे बहुत भरोसा है उन तीनों पे जो अभी नए नए आए हैं उनकी जगह पे कि वो लोग अच्छा करेंगे. सूर्य करीब 40 महीने पहले आपने इंटरनेशनल डेब्यू किया था और 40 महीने बाद इंडिया की कप्तानी करेंगे. सोचा था कितना बड़ा चैलेंज या ऑनर है और किस तरह से आपकी कैप्टनसी किस तरह से डिफरेंट होगी रोहित शर्मा ब्रांड और कैप्टनसी जो T20 में वो करते थे? देखिए पहले तो हर प्लेयर का ड्रीम होता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना, इंडिया के लिए अच्छा करना. तो वो मेरा फर्स्ट ड्रीम था. जब वो अच्छा चल रहा है तो धीरे धीरे आप ये सोचते हो कि कैसे आप इंडिया को एक बड़ा टूर्नामेंट जीता सकते हो, मैचेस जीता सकते हो. फिर एक और गोल आता है कि कभी आप इंडिया को अगर कैप्टन करोगे तो आपके ड्रीम में ये रहता है कि अगर ड्रीम कि आप कैप्टन करोगे तो इंडिया को कैसे जिताओगे अच्छे टूर्नामेंट्स, अच्छे टीम्स के अगेंस्ट खेलने के बाद. तो ये भी एक और ड्रीम है जो बॉक्स टिक हो गया है और अच्छा लग रहा है. बट मैं हमेशा से ये सोचता हूँ जो मैंने सीखा है रोहित शर्मा से, वो हमेशा एक लीडर के जैसे थे ग्राउंड पे और ऑफ द फील्ड. एक कैप्टन के जैसे नहीं थे. बहुत डिफरेंस होता है दोनों बातों में. एक लीडर थे जो ग्रुप के बीच में खड़े रह के लोगों को रास्ता दिखाया उन्होंने कि कैसे खेलना है ये T20 क्रिकेट और कैसे जीतना है टूर्नामेंट. तो वही मैंने उनसे सीखा है और वही सेम ट्रेन आगे चलेगी. खाली सिर्फ इंजन चेंज हो गया है, बोगियाँ वही हैं ट्रेन की. रेहान पराग को किस तरीके से आप रेट करते हैं? क्योंकि यह गया काफ़ी और इतनी कम यंग होने के बावजूद उनको ट्रोल बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है. तो रेहान पराग को आप कैसे रेट करते हैं? सर देखो ट्रोल और ये सब तो चलते ही रहता है कोई भी स्पोर्ट में, क्रिकेट में ही नहीं, वो तो चलते ही रहता है. उसके साथ आप एक प्लेयर, एक स्पोर्ट्समैन कैसे डील करता है वो इम्पॉर्टेंट है. और मैं तो उसे बहुत हाई रेट करता हूँ. मैंने जैसे कि IPL के पहले भी कहा था जब मैं उससे मिला था NCA में, जब मैं भी रिहैब कर रहा था वो भी रिहैब कर रहा था, कि उसमें वो एक एक्स फैक्टर है जो उसे बाकी सब चीज़ों को साइड में रख के जिसको फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर. और आई थिंक उसने रियलाइज़ किया वो IPL में. वो बहुत डिफरेंट प्लेयर था लास्ट 3-4 साल से एंड मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए. और उसका जैसे वो लास्ट 2 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि वो भी एक डोमेस्टिक क्रिकेट भी एक अच्छा बेस सेट करता है, अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे आके परफॉर्म करने के लिए. आपको पता चलता है कि आपको रन कैसे बनाने हैं आगे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट पे. तो इट हेल्प्स यू इन दैट वे और आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ हियर विद द टीम. So yeah, recently job for you, but do you see it as something being something separate from your batting and also
I think nothing changes. As I said, the brand of cricket remains the same. What I have been playing, what I have been doing for the team, it doesn't change. It's given me an added responsibility, and it's good that now I can do walk the talk. හරි ඔයගෙන් දැනගන්න මේ දැනගන්න ඕනේ දැන් ඔයාලට නායකත්වයක් ලැබිලා තියෙනවා ඒ වගේම අභියෝගයක් තියෙනවා මොකද අපේ ප්‍රධාන පෙරේ මන්ත්‍රීවරණ දෙදෙනෙක් වලට ඉන්ජෙක්ට් වෙලා තිනවා එතෙන්ට ආදේශකයන් තමයි මේකට ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මොකක්ද ඔයාගේ ප්ලෑන් මොකක්ද මේ අලුත් මේ මන්ත්‍රීවරණ සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද ඔයාගේ තියෙන ඒ ප්ලෑන් එක මොකක්ද ඔව් නායකයෙක් විදියට ඇත්තටම කනගාටුයි මගේ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් ආබාධ වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වෙනවා ක්‍රීඩාවේදී ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි දෙයක්. නායකයෙක් විදියට ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕන ඊට පස්සේ එන චැලෙන්ජස් වලට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා අපිට LPL ගහපු එක මේ ළඟදී ලොකු chance එකක් කියලා. මොකද ෆෝම් එකේ ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා අපි දන්නවා කවුද කියලා. ඉතින් ඒ ප්ලේයර්ස්ලා ගෙන්නලා මම හිතනවා අපිට හොඳ ආදේශක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ ආදේශක වලින් උපරිම දේ කරලා තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Surya, in 2015, you had to quit Bombay captaincy because of different reasons, because sort of being reportedly your style of captaincy was not reportedly not liked by the players and the destination. Now after choosing you as Rohit's successor, Ajit Agarwal said, we take feedbacks from the dressing room, you are a very popular member of the dressing room. So can you tell us about the transformation? Sir, I think it's a complete swap from, if you say 2014-15, it's almost 10 years now. And in 10 years, a lot of things change. You become a different person altogether. You get to learn a lot of things. So I'm also a complete changed man now. Even after 2016, I got married also. So absolutely, you have to you have to change after that as well. But yeah, things are completely different now. Got to learn a lot of things from different captains I played under, and obviously. Rohit Sharma, I've been playing with him from last 6 years, so there's a lot of learnings taken from him, and in my own style, will take the ship forward. So yeah, so now you're playing only one format internationally, and you're the captain of the format. What are the challenges when you're playing only one format for the country? It's just the start now. I don't know after few months what the story will be for me. But currently, looking at this format, I know I've been playing this format for last 3-4 years. I know how to take things ahead. And being a leader, I can actually tell the team how to go about in this format, like how we've been playing in the last 1.5 years in Rohit's captaincy. So it won't be a different thing. I think it'll be good with a lot of different players in the dressing room, good characters around. So I think it's a good challenge. Charit, LPL की perform करको किधर इंटरव्यू में लगा स्कोर देने का चांस है लेकिन तीनों विशेषण में टॉप को रहते का जो सहन हमारी इंडियन सिलेक्शन को में देखी ना पूरा के सिलेक्शन में तीन विशेषण टॉप को के साथ नंबर आते पोजीशन में करना किसी को भी तो नहीं මුලින්ම කියතම මම කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරු 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 4 දෙනාව යොදාගන්නේ මුල් ස්ථාන තුනට. ඊට අමතරව එක්කෙනෙකුට අවස්ථාව අයින් වෙනවා. ඒ 4න් 3 දෙනෙක් තමයි මම හිතාගෙන ඉන්නේ නම්බර 3 පළවෙනි 3 වෙනි තැන යූස් කරන්න. අනිත් එක තමයි නම්බර 4 මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සම්මුදු මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩා කරන්න ඉඩ තියෙනවා. එයාගේ ෆෝම් එකත් එක්ක එයා ක්‍රීඩා කරපු විදියට LPL එකේ LPL එකෙන් දක්ෂතාව දක්වපු ක්‍රීඩකයෝ කෙනෙක් ගැන කතා කරොත් අපිට තියෙන T20 කණ්ඩායම තෝරගන්න තියෙන ලොකුම ටූර්නමන්ට් එක තමයි LPL එක. මම හිතන්නේ අපේ ඩොමෙස්ටික් සීසන් එක ඩොමෙස්ටික් T20 වලට වැඩිය ඉහළ තත්ත්වයක තමයි LPL තියෙන්නේ. ඉතින් මම නායකයෙක් විදිහට LPL perform කරොත් එයාට ලොකු chance එකක් හම්බ වෙනවා. මම හිතන්නේ
ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායමේ T20 ක්‍රීඩා කරන්න ලොකු අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා කියලා මම හිතනවා. Yeah, you can ask. My question is for Surya. Can you tell us about the day one when you came up, the first training session, the first work as a captain, the discussions with the head coach? What was that day like when the first time you were address the team, and what kind of the माहौल किस तरीके से था उस day one को अगर आप summarize कर सकते हैं? No, I mean, it was obviously exciting to take that walk. It's a nice walk from the dressing room till the ground. I always like it when you take that stairs and go down towards the ground. It's always a great feeling. But yeah, as a captain, it's a good feeling. बहुत अच्छा लगा नीचे जाके टीम के साथ because ये सब लोग हैं जिनके साथ मैं खेला हूँ पहले IPL में भी, and coach as well. I played under him. I've been with him, been around him for a long time. So it's a great feeling, and I am really excited for the journey ahead. ඔව් මම හිතන්නේ අවුරුදු 15න් 15 ඉඳන් නායකත්වයේ දාලා තියෙනවා දිගටම. ඉතින් ගොඩක් වෙනස් වීම වෙලා තියෙනවා මගේ. මම හිතන විදිහට අපි හැමදාම ඉගෙන ගන්නවා දේවල්. ඒක තමයි මම ටීම් එකේ මගේ ටීම් මෙම්බර්ස්ලටත් කියන්නේ. අපි අද හිටපු දන හෙට ඉන්න බෑ. අපි දවසින් දවස ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් හොඳ නායකයෙක් හැදෙන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් නායකයෝ යටතේ ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. මම ගොඩක් නායකයෝ දිහා බලන් ඉන්නවා තරඟ බලද්දි. ඉතින් ඒ හැමෝගෙම හොඳ දේවල් මම මගේ නායකත්වයටත් මම ප්ලේයර් කෙනෙක් විදිහටත් මගේ ලයිෆ් එකටත් මම ගන්නවා. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර කිව්වා වගේ මට ඇත්තටම ඕන මගේ ප්ලේයර්ලගෙන් 100% ගන්න. එයාලගේ එන්වයරන්මන්ට් එක හදන එක තමයි මම නායකයෙක් විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට අමතරව ලොකු වෙනස්කම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. ගොඩාක් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ අපිට ඉන්නවා. හැබැයි අපි නායකයෙක් විදිහට කරන්න ඕනේ. එයාලගේ 100% අරගෙන රට දිනන එක තමයි අපේ ප්‍රයොරිටි එක වෙන්න ඕන. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට කියලා තින්නේ හරි ෆ්‍රී එකේ සෙල්ලම් ගන්න. අපි ප්ලෑන්ස් දුන්නාම ඒවට බය නැතුව ගිහින් එක්සිකියුට් කරන්න. ඒ වගේ දේවල් තමයි. මොකද අපේ ස්ටාෆ් එකත් මම නායකයෙක් විදිහට මමත් ඒ ෆ්‍රීඩම් එක දීලා ඒ ෆ්‍රී මයින්ඩ් සෙට් එක එයාලට දීලා කොහොම හරි එයාලගේ 100% ගන්න තමයි නායකයෙක් විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. सूर्य भाई आपके जैसा बैटर T20 क्रिकेट में इतनी कंसिस्टेंसी और इस तरह का स्ट्राइक रेट एवरेज दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है. आप जब कैप्टन बने हो तो कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेट लोग कर रहे हैं कि कहीं सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी वो प्रेशर ना आ जाए और उनका गेम चेंज ना हो जाए. क्या आप कुछ एश्योर कर सकते हो? आप कभी भी रैश शॉट्स नहीं खेलते उस तरीके से, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये जो अत्यधिक जिम्मेदारी है कप्तानी की वो कहीं ना कहीं आपके बैटिंग स्टाइल को थोड़ा सा बदलेगी? हमने पास में भी देखा है कि बैटर्स बदले हैं, उनकी मेंटालिटी बदली है बैटिंग करते वक्त. मुझे तो नहीं लगता है कि बैटिंग स्टाइल इतना चेंज होगा. और जैसे कि आपने कहा कि प्रेशर होगा, प्रेशर तो होता ही है. प्रेशर नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा ये स्पोर्ट खेलने का. और जैसे मैं खेलते आ रहा हूँ वैसे ही खेलूँगा, कुछ चेंज नहीं होगा. अब तो और अच्छा हो गया है मेरे लिए, क्योंकि मैं एटलीस्ट खुल के टीम को बता सकता हूँ कि हमको किस ब्रांड का क्रिकेट खेलना है गोइंग फॉरवर्ड आगे T20 में. और कुछ ऐसा ज़्यादा चेंज नहीं होगा. खाली यही है कि और मज़े से खेल सकता हूँ, और अब थोड़ा प्रेशर दूसरों पे ढकेल सकता हूँ और एंजॉय करके क्रिकेट खेल सकता हूँ अपना. और Charit, how much prepared are you in this mighty Indian World Championship? Tell me something about preparation of Sri Lanka. I think it's always a challenging series for us, to be honest. But as a captain, I want to prepare my players for the get out of my 100% from my players. So I think we had great preparation before this series, that LPL, Lanka Premier League. We played that tournament, and I think boys did really well. And I just want to get their best out of get their best from individual players. सूर्य, गौतम ने इस
साल के स्टार्ट में IPL के दौरान उन्होंने कहा था कि उनको KKR साथ एक ही रिग्रेट था कि आपकी पोटेंशियल वो पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाए थे। जब आप कप्तान बने, वो कोच बने हैं, इस बारे में चर्चा हुई या फिर गौतम के साथ आपका पहला इंटरेक्शन कैसे रहा? आप कप्तान बने, वो कोच तो अभी कर लेंगे पूरे पोटेंशियल को यूज़ दोनों मिलके नहीं देखिए, हमारा बॉन्ड हमेशा से स्पेशल रहा है 2014 से लेके अभी तक। अभी एग्जैक्ट 10 साल हो गए उस बात को, और बीच में हम 2018 में मैं यहाँ दूसरे फ्रेंचाइज में आ गया और वो दूसरे फ्रेंचाइज में चले गए। बट हम रेगुलर बात करते रहते थे एक दूसरे से गेम के बारे में। जब वो दूसरी टीम से खेलते थे, मैं यहाँ से खेलता था, तो हम लोग गेम डिस्कस करते रहते थे कि क्या हम लोग बेटर कर सकते थे वो मैच में। तो जो लर्निंग थी वो तो 6 साल पहले से चलते हुए आ रही है, जब मैं उनके साथ नहीं भी था साथ में। तो इसीलिए, और ये बॉन्ड हमेशा स्पेशल है। अभी लास्ट जैसे 3-4 दिन हो गए, हमने बात करी है बहुत, लेकिन इतनी बात नहीं करी है। बट उनको पता है, मेरा बॉडी लैंग्वेज देख के, मुझे उनका बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल जाता है कि उनको मुझे क्या बोलना है और मैं उनको क्या बोलना चाहता हूँ। और कुछ बातें तो ऐसी भी है कि जब मैं नहीं भी बोलूँ तो उनको समझ जाता है कि हाँ, कि वो क्या चाहते हैं और मैं क्या चाहता हूँ। तो ये एक बॉन्ड बहुत स्पेशल रहता है कोच और कैप्टन के बीच में। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपने आगे इस जर्नी के लिए, और लेट्स सी क्या होता है।